गम इतना है कि महसूस कर लीजिए। महसूस मत ही करिए, वरना रो देंगे। ये आरसीबी के सारे फैंस, इनफैक्ट हम दोनों स्क्रीन पे जो हैं, वो हम भी लगभग इसी ताल्लुकात में रखते हैं। बट क्योंकि हम यहाँ पे शो करने आए तो थोड़ा न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे। लगातार 3 हार डाइजेस्ट करना इज नॉट इजी, बट लेट्स सी हाउ इट गोज अनफोल्ड्स ऑन द पॉडकास्ट। बट वेलकम टू द थर्ड मैन क्रिकेट शो। यहाँ पे आज हमारे साथ वापस से स्पेशल गेस्ट नेहा शेट्टी फ्रॉम द नेवर ऑन द बैक फुट पॉडकास्ट इज हेयर, और उनके काफी सारे पेजेस हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक ट्री का लिंक है, वहाँ पे सारे उनके प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो कहीं भी पॉडकास्ट करती हूँ, सबका लिंक दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। और थर्ड मैन को भी फॉलो कीजिए इफ आर नॉट ऑलरेडी। साथ में अगर आप बाद में स्ट्रीम देखेंगे तो आपके लिए भी है, प्लीज स्ट्रीम को लाइक कीजिए। आप पूरा स्ट्रीम देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आए तो कमेंट में बताइए कि क्या पसंद नहीं आया, क्या बेहतर कर सकते हैं हम, आप उस पर कमेंट कीजिए। हम सारे कमेंट्स को पढ़ते भी हैं और उस पर रिस्पॉन्स भी देते हैं, तो प्लीज डू दैट। और चलिए आप शुरू करते हैं शो का। नेहा, फर्स्ट ऑफ ऑल थॉट्स ऑन द प्रोसीडिंग्स टुडे, मतलब जो आज मैच हुआ, हाउ डिड यू फील अबाउट इट? लेकिन लास्ट में आते आते वी थॉट कि शायद हेदर नाइट इज डूइंग इट फॉर अस व्हाट एबी डिविलियर्स यूज्ड टू डू, बट इट वाज नेवर ऑन द कार्ड। Hi Ronak. First things first, thank you so much for having me back on your show. It is an absolute pleasure to be here. And जब हम मैच की बात करें तो it was again a case of RCB just not being able to cross the line because margin देखे तो बस 11 runs की बात है, but RCB ने बहुत सारे areas पे आज काम किया, but we still just couldn't get through to the final line. तो जब आप देखते हो like we were bowling first and Gujarat Giants से क्या 201 डाला बोर्ड पे, and that was obviously going to be a very tough total chasing, but positives हैं बहुत ज़्यादा, as हम अपने conversation में भी we will bring it up, but again I think with 3 losses RCB looks like we're pretty much out of the equation, but quite disappointing, I'd say. Yeah. Yeah, quite disappointing because in 8 matches, if you lose first 3 matches, it is almost like a knockout punch. अभी यहाँ से जो भी मैच होंगे it will be with immense pressure, और वो pressure add on करेगा, चाहे जो भी स्कोर चेज कर रहे हो या चाहे जो भी स्कोर बना रहे हो, that will hurt a lot. क्योंकि स्मृति मंधाना जो लास्ट टॉस मुझे याद है, विल टॉक अबाउट गुजरात ऑल्सो, ये सिर्फ आरसीबी का पॉडकास्ट नहीं है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो लास्ट मैच का भी टॉस था उसके अराउंड जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया दैट इट इज अ हाई स्कोरिंग राउंड, तो स्मृति सेड Hmm. कि यस वी आर लुकिंग टू स्कोर अराउंड 200 प्लस और समथिंग लाइक दैट। तो वैसा माइंडसेट लेके मैदान पे उतरना दैट वी हैव टू स्कोर फ्रॉम द बॉल वन वाज अ बिट टेंटेटिव, और स्मृति कप्तानी आज भी थोड़ी सी लैकलस्टर लगी, टू द पॉइंट दैट जब स्पिनर्स को आपको इंट्रोड्यूस करने थे इन स्टार्टिंग फेज ऑफ द गेम, मे बी जस्ट आफ्टर द 6 ओवर, मे बी 7th ओवर या 8th ओवर में किया भी, एंड देयर वर very 8-9 positives also which I have pointed out, but these Hmm. are little loopholes जहाँ पे अपन ने मिस आउट किए काफी सारे पॉइंटर्स, आरसीबी ने मिस आउट किए काफी सारे पॉइंटर्स, एंड मे बी शी इज लर्निंग, और उनकी बैटिंग पे शायद कैप्टनसी का थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। लेट्स सी हाउ इट Hmm. गोज, बट यूसुफ परवेज इज हियर today against women IPL team lost to Gujarat Giant by 11 runs. Yes, they lost it. Uh, that is a fact. So sad news for RCB women's. Yes, we also are sad, equally sad, Yusuf Bhai. But RCB women's team had to learn mistakes this IPL women's season 2023 and come back next season Yeah. 2024 with better coach to better coach is a bit dicey thing over here. Better coach का बाद में डिस्कस करेंगे, to train them and make winning momentum for RCB team. कोच आप कितना भी बेहतर ले आइए, फॉर मी माइक हेसन से बेहतर आपका टीम डायरेक्टर, टीम कोच, आई Hmm. डोंट थिंक यू विल गेट इन द वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। तो कोचिंग स्टाफ या मैनेजमेंट पे ऑन दिस परफॉर्मेंस यू कैन नॉट पॉइंट them Yeah. out. But yes, we will come back for sure. A defeat is today, Matt. Yes, same comment, same on the same lines. Uh, yes, good evening, Ronak bhai. Good evening, Jay bhai. How are you? And जितने लोग भी हैं, आप लोग कैसे हैं? बताइए कमेंट्स में आपके तबीयत, क्योंकि बहुत यहाँ पे आसपास सबको खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, तो आई होप यू आर वेल एंड फाइन।
Yusuf, RCB women's team has to learn mistakes and digest it. Absolutely. डाइजेस्ट डिफिट तो कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, वो तो हार गए तो डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन. बट यस, दे आर लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स. जैसे नेहा ने कहा कि दे आर क्वाइट अ फ्यू पॉजिटिव्स, सो इफ वी वांट टू टॉक अबाउट पॉजिटिव्स, बट बिफोर दैट कांग्रेचुलेशंस टू गुजरात जायंट्स एज वेल. उन्होंने काफी अच्छा फाइट बैक किया लास्ट मैच में भी. दे वेंट Hmm. टिल द एंड, एकदम डॉटेड लाइन तक गए जहां पे बस क्रॉस नहीं किया, एंड दे वेंट इन विद क्लियर माइंडसेट टुडे कि हमको Hmm. स्टार्ट से ही विल हैव टू पुट अ लॉट ऑफ रन्स. तो ऑन गुजरात परफॉर्मेंस टुनाइट, नेहा. I think Gujarat was really good, considering they were also coming into this game on the back of two losses. They had a point to prove, and they did so in, I think, a commendable fashion, winning this match by 11 runs. So I think the biggest positive for them had to be the way Sophia Dunkley played, right? Now she gave them the best possible start, getting those Yeah. 65 runs. And Harleen Deolbi, at number three, which is, seeming as which is looking like a very suitable position for her in the Yes. T20s, right? Scoring Yeah. 67 and her strike rate was like close to 150, right? तो वो Yeah. बहुत ही ज्यादा impressive लगा. And it's going to show that Gujarat can rely on her as the number three. And because इन दोनों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, बाकियों को like उतना एफर्ट डालने की Mhm. जरूरत ही नहीं पड़ी. They just had to Absolutely. give like cameos and finishing touches to what was already a very competitive total. Yeah. So I think ये उनका बहुत ही बड़ा positive होगा. And the way they bowled to RCB, right? Because last में हमें लग रहा था कि Heather Knight would just take the match away, Yeah. but wickets गिर रहे थे. You could see how Sneh Rana just put everything of her on the field. मतलब injury के साथ भी खेल रही थी, and she was just Yeah. nothing short of brilliant. So I think these are the positives they can definitely take and go ahead. And unka campaign is on also, no, with this win. So Yeah. all in all, great match for them. Yeah, absolutely. A very good match for them. Or especially Sneh Rana ने at the not Sneh Rana, I guess Harleen Deol ने before the toss एक उनका interview दिखाया गया from past. Uh, Hmm. not too wayward, but एक दो दिन पहले का इंटरव्यू था जिसमें Hmm. उन्होंने कहा that हम लोग पिछले मैचेस का जो बैगेज है वो कैरी नहीं कर रहे हैं. We are Hmm. thinking about today, and we have moved on from the loss, but we saw what we could do in the last match. Today we'll Hmm. have to prove in this match. So yes, all in all very good effort. और हरलिन देल का जो आपने पोजीशन का बात किया, एक्चुअली मुझे वो पॉइंट पे बात करना ही था. तो बिकॉज यू ब्रॉट Hmm. इट अप, तो इंडियन टीम में नंबर 5 नंबर 6 पे पोजीशन उनको मोस्टली मिलती है, मतलब जहां पे फिनिशिंग के रोल्स उनको देखा जाता है. एंड Hmm. सी इज वन प्लेयर जिनको डोमेस्टिक में भी हमने कभी, मतलब ज्यादा नहीं, बट वुमेन चैलेंजर्स कप वगैरह होते हैं उसमें Hmm. मैंने पर्टिकुलरली देखा है. पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट यू, बट उनको हार्ड हिटिंग करना पसंद नहीं, उनको एंकर वाला रोल ही करना पसंद है जहां पे वो सिंगल्स डबल्स में बिलीव करती है एंड Hmm. कैलकुलेटिव रिस्क लेती है. तो दैट इज हाउ शी प्लेज. बट इंडियन टीम में क्योंकि ऊपर में स्लॉट्स ऑलमोस्ट फिल रहते हैं हमेशा, चाहे वो मेंस टीम हो चाहे वुमेन्स टीम हो, स्लॉट्स फिल रहते हैं. तो हरलिन देओल को नंबर 5-6 पोजीशन दिया गया, एंड दैट वहां पे वो जस्टिस नहीं कर पाई, इसलिए वो इन एंड आउट रहती है टीम की. बट यहाँ पे आई थिंक इट सूट्स हर द बेस्ट, एज यू सेड, जो नंबर पोजीशन पे दिया गया उनको, नंबर 3 पे नंबर 4 पे. एंड क्योंकि उनके पास इंडियन टैलेंट की वैसे भी कमी थी गुजरात के पास एट आफ्टर द Hmm. ऑक्शंस, जो मतलब अच्छा एक प्रोमिनेंट टैलेंट, तो शी कुड साइन, एंड वो उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया. तो यस, गुड फॉर हर. लेट्स होप कि इंडियन टीम को आगे जाके अच्छा मिले कुछ. Absolutely. जे भाई कह रहे हैं आरसीबी वर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन पेपर अगेन बट फेल्ड एक्सपेक्टेशंस. You can say to an extent, क्योंकि आरसीबी के they bought the best opening batter, they bought the best finisher, they bought the best bowlers in Renuka Singh Thakur and Megan Shoot. So you cannot complain with the team, but जो performance on field आ रही है उस पे reflection करना जरूरी है. And um, maybe as a unit they have not gelled up yet. शायद next season से Hmm. यही टीम लेके हम बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, जैसा वी हैव सीन विद चेन्नई सुपर किंग्स. एक सीजन वही टीम लेके वो लास्ट आती है और एक सीजन वही टीम लेके वो चैंपियनशिप जीत जाती है. तो इट माइट हैपन विद आरसीबी एज वेल कि इस सीजन उनके पास टीम अच्छी है, नो डाउट. ये टीम जो है हमने खेली काफी अच्छी थी, Hmm. और आज एक टेक्टिकल जो चेंज किया टू ब्रिंग अ लेग स्पिनर इन पूनम,
दैट वाज आल्सो ब्रिलियंट मूव कि हमको एक लेग स्पिनर चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑफ ब्रेक बॉलर, तो दैट वाज आल्सो वेरी गुड मूव आई फील। एंड चेंजेस अच्छे किए, और टॉस के बाद वी हैड अ गुड चांस क्योंकि हमने बैटिंग सेकंड करना था, और ड्यू ड्यू का फैक्टर वाज लूमिंग, 10 ओवर लास्ट में ड्यू हम्म, आया, तो वी हैड अ ग्रेट चांस, और लास्ट में आते आते लगा कि वी आर विनिंग, बट आरसीबी, यस, होता है, आदत हो गई अब। Uh, Hi, Ronak. Hi, Neha Shetty. Nothing problem. RCB women's today match is lost and bad day for them today. Forget about this loss and concentrate RCB women's. Yes, of course. कोई और option भी नहीं है. Neha, comments on this. RCB favorites to win the trophy, and here they are good as eliminated. मतलब, मतलब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक्सपेक्टेशन एंड उम्मीद यही था कि आरसीबी वाज फेवरेट्स टू विन द ट्रॉफी। इतना अच्छा टीम उन्होंने एसिमुलेट किया था। यू हैव एलिस पेरी, हेदर नाइट, डैनी वैन न्यूकर्क, यू हैव स्मृति मांदना, ऋचा घोष, रेणुका सिंह ठाकुर। मतलब as I tell you the names, they're going to be immediate match winners for the team. But it has been tricky. जब आपने भी ये point बोला था कि the team has not gelled well together, so probably that is one of the reasons we are not seeing success. And now with 3 losses, we immediately see them eliminated. Yeah, this also brings into question the structure of the women's Premier League too, right? We're just looking at barely 10 to 12 matches in the league stages, and it's just happening very fast because hey, teams punch now. So yeah, in that sense, I think it is sad that losing 3 matches means you're pretty much out of the tournament. Because men's IPL ki baat kare to we there is a lot of chances to recover. Like Mumbai always has like the worst possible starts, but they make up yeah, for it, right? In the rest of their matches in the lead up to the knockout. So I hope RCB can use this season as a learning curve, to figure out what works, what doesn't work, and I hope they play the rest of the season with more freedom, try different combinations, because you can't have a player like Danny Van Nierkel, warm your benches. वो match winner रह चुकी है for South Africa. I mean now, because of fitness absolutely. issues, she doesn't play. But 100 में भी इतना दिग्गज खिलाड़ी है वो. She's been the MVP as well. So I just Yeah. hope RCB can use the rest of the matches to figure out their combinations and just come back stronger, play for pride and play for their fans, I guess. Absolutely, play for pride. और अभी खत्म नहीं हुआ है, मे बी if we can do what you mentioned about Mumbai Indians win 5 in a row, तो मे बी चांस है, बट the one point that which I wanted to talk about कि मुझे पहले मैच से, not because RCB lost 3 matches in a row, पहले मैच से पहले how many days, hardly 2 or 3 days every women players arrived before that, right? Maybe 2 or 3 days, so that was not the right period of time or time frame to Hmm. fill up with the team, and कुछ टीमें अच्छा कर रही हैं फॉर श्योर, वहाँ पे मे बी टीम कल्चर उन्होंने जल्दी बॉन्डिंग कर ली, या फिर दे Hmm. जस्ट अंडरस्टूड द रोल्स वेल, बट कुछ टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात स्ट्रगल कर रही थी फर्स्ट मैच में, अब Hmm. डीसी का वो पॉइंट आया नहीं है। आई स्टिल बिलीव दे डोंट हैव अ ग्रेट बैटिंग लाइनअप, उनका जो Hmm. स्टार्ट उनको मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ शफाली एंड मैगलेनिंग। आई वांट टू सी Meglan. जब या उन दोनों का जब पार्टनरशिप नहीं चलेगा किसी दिन, आई वांट टू सी कि उनके बाद कैसा करते, क्योंकि जमाइमा इज नॉट इन अ Hmm. ग्रेट फॉर्म, उसके बाद उनकी बैटिंग लाइनअप है नहीं उतनी कुछ खास, तो आई वांट टू सी कि वो लोग वैसा परफॉर्म कर करते। बट गुड फॉर देम कि 2 लगातार मैच उन्होंने, उनको अच्छी शुरुआत मिल गई, उसके बाद कैपिटलाइज किया उसके ऊपर, तो दैट इज अ गुड फैक्टर फॉर देम। बट बाकी टीम्स, मुंबई इज डूइंग रियली वेल, यूपी Hmm. वॉरियर्स अगेन स्ट्रगलिंग टू एन एक्सटेंट, नॉट ग्रेट विद द बैट, बॉलिंग उनका बेस्ट है टूर्नामेंट में, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बस तो हर टीम के पास कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ टीमें उसमें उभर पाई हैं, लाइक मुंबई एंड डीसी। Let's see how they goes, and Mumbai is doing the strongest as usual, Hmm. uh, and they are on course with, but the biggest problem is IPL में हर टीम का कैंप एटलीस्ट 1 डेढ़ महीने पहले लगता है, और WPL Hmm. में कैंप भी नहीं लगा। दैट इज द डिफरेंस, और अपने पास 8 ही मैच हैं तो पर हर टीम के पास, तो दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ वरी। Exactly. गौरव पंडित, स्मृति को कैप्टेंसी सूट ही नहीं कर रही और लोग उसे इंडियन कैप्टन के लिए बोल रहे थे। गौरव भाई, पहले नेहा, यू गो अहेड विद दिस, आई हैव माय पॉइंट्स एज वेल। राइट, आई मीन मुझे लगता है कि लाइक 3 मैचों में यू कांट मेक एन असेसमेंट कि दिस प्लेयर इज नॉट गुड एज अ कैप्टन, और बिकॉज
ये बात ऐसी है कि we were looking at 4 overseas players also in the team, right? So for Smriti Mandana to make her plans to figure everything out, it will take time. So I think it's very unfair and really too soon to make a tough call like this. उन्हें captaincy suit नहीं कर रही है because she's a stellar batter, but we need to give her more chances as the skipper because management ने कुछ सोच के उन्हें दिया होगा ना, because the team already has the captains in the form of Sophie Devine, you have Danny Van Meerkerk, and मतलब even though Smriti Mandana is inexperienced as a captain, the management did think it through. So I feel it's too early to make a decision on that call. Like some of her decisions are questionable, not gonna lie, but then we need to give her a longer rope. या एटलीस्ट दिस सीजन फॉर श्योर, मतलब अगर आप उनको 8 मैच भी नहीं दे रहे प्रूव करने के लिए कि इफ शी इज अ गुड कैप्टन और नॉट, देन यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योरसेल्फ एज वेल. तो स्मृति मंधाना का जो ये कैप्टनसी टेन्योर 3 मैच का रहा है, एंड बिफोर दैट आई डोंट थिंक किसी भी टीम के लिए उन्होंने परमानेंट कैप्टनसी की है. और वो अगर वुमेन्स चैलेंजर की बात करें तो दैट इज एज गुड एज नथिंग. मतलब 2 मैच के लिए क्या है कैप्टनसी. तो दैट डज नॉट ब्रिंग इन द पिक्चर कि उनका कैप्टनसी स्टैचर क्या रहा है. एक्सपीरियंस नहीं है फॉर श्योर, जैसा नेहा ने कहा. तो आई ऑल्सो बिलीव कि ये 3 मैच से हम जज नहीं कर सकते. फॉर श्योर उनके कैप्टनसी कॉल्स जो है इस मैच में भी थोड़े क्वेश्चनेबल थे, एंड पिछले 2 मैच में तो टॉस पे ही कैप्टनसी पे इश्यूज आ गए थे. लेट्स होप कि आगे चल के वो इम्प्रूव करेंगी, एंड इफ शी गेट्स बेटर देन अ नेम ऑफ इंडियन स्टैचर, मतलब जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट में सबसे बड़ा या फिर दो सबसे बड़ा नाम जो है हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना, उन दोनों में से कोई कैप्टन रहेगा तो ब्रांड वैल्यू Hmm. विल आल्सो इंक्रीज. तो अगर वुमेन्स क्रिकेट को ग्रो करना है तो मनी हैव टू कम इन. मतलब किसी भी स्पोर्ट में इफ यू हैव टू ब्रिंग इन मनी, यू हैव टू मेक द पावर प्लेयर्स योर फेस ऑफ द कंपनी. तो वो मूव बहुत अच्छा था. जस्ट होप दैट कि इसके साथ जो क्रिकेट दैट इज विच इज द कोर पार्ट ऑफ इट वो भी काम करे. एंड कोर पार्ट अगर वो काम करेगा तो नथिंग बेटर देन दैट. जैसे कि मतलब दो आरसीबी मेंस टीम हैज नॉट वन अ ट्रॉफी, बट उनकी Hmm. पॉपुलैरिटी और उनकी ब्रांड वैल्यू इज ऑन अनदर लेवल, और यू सी देम winning the trophy maybe in next 2-3 seasons or this season as well maybe. But let's see how it goes. But ये move जो स्मृति मंधाना का था, that is tactical as well as business point view, दोनों से Hmm. सही था मेरे हिसाब से. Because having an Indian captain of that stature is very rare in women's cricket specifically. क्योंकि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम में फिलहाल एक ही कैप्टनसी मटेरियल थी जो हरमनप्रीत कौर है, वो मुंबई इंडियंस को मिल गए. तो द सेकंड बेस्ट ऑप्शन वी गॉट इट, आरसीबी गॉट इट. Yeah. तो या आई हैव नो क्वाल्म्स अबाउट दैट, बट जस्ट दैट कि आगे चल के परफॉर्मेंस इम्प्रूव होनी चाहिए. Hi Ankit, how are you? Gaurav Pandit, either night can't be your bowler for God's sake. She don't even bowl for his national side, only in test. देखिए that is a question that you have to think during the match situation, जहाँ पे आपकी एलिस Yeah. पेरी, Yeah. who is world's maybe best one of the best bowlers currently, maybe not one of the best but in top 5 for sure T20 formats में, जो अगर वो अपना करियर का थर्ड वर्स्ट और सेकंड वर्स्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आइदर ऑन दोज लाइन, थर्ड वर्स्ट और सेकंड वर्स्ट फिगर्स लेके आ रही है इस मैच में, तो यू गो टू योर लास्ट रिजॉर्ट एज वेल. जिनको मतलब हाथ घुमाना आता है उसके पास भी आप जाते हो. तो Hmm. दैट इज द चॉइस दैट स्मृति मंदाना मेड. वो दैट इज नॉट व्हाट वाज इन द प्लान. मतलब पहला प्लान ऑफ कोर्स हेदर नाइट के पास जाना नहीं रहेगा. यस Hmm. नेहा, यू टू ऐड समथिंग. एंड I'd like to add कि जब हम ये टीम डायनामिक्स भी देखें तो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग एट मेगन शूट, एलिस पेरी, रेणुका सिंह ठाकुर एंड प्रीति बोस, श्रेयंका पाटिल ऑल्सो टू सम एक्सटेंट एज योर फ्रंट लाइन बॉलर्स. जब इनका किसी का ऑफ डे होगा तो यू विल ऑब्वियसली वांट टू गेट इन समवन हु हैज गॉट यू विकेट्स इन द प्रीवियस मैचेस, एंड हेदर नाइट डज प्रेजेंट हरसेल्फ एज दैट ऑप्शन. मतलब वो या एक्स फैक्टर है. पीपल डोंट एक्सपेक्ट हर टू परफॉर्म एज मच विद द बॉल, but she's हाँ. getting you wickets. So I think it's a win-win situation if we can use her strategically in matches, because people least expect her to get wickets, but she's getting you wickets when your other bowlers are having an off day. I would just take it in my stride, I feel. Yeah, if you are getting that, you are getting a कहावत क्या है, यू आर गेटिंग वन फॉर द प्राइस ऑफ टू, सॉरी यू आर गेटिंग टू फॉर द प्राइस ऑफ वन, राइट. Exactly. तो सॉरी अबाउट द गुफा, बट जो अगर मिल रहा है तो व्हाई वोंट यू टेक इट. यस अंकित, तो यस्टरडे रंगों की होली, टुडे रनों की होली. वो डीवाई पटेल पे चल ही रहा है. हर मैच में 200 के आसपास बन रहा है. इवन ब्रैबॉर्न फॉर दैट मैटर, दोनों जगह पे 200 क्लोज रन हर मैच में बन रहे हैं. तो इट इज ऑन गोइंग होली. एंड what this will do is from
टूर्नामेंट पर्सपेक्टिव विल ब्रिंग इन ऑडियंस, मतलब Yeah. जो 200 बन रहे हैं माइट नॉट लुक गुड फॉर द बॉलर्स, बॉलर्स वापस घर जाना चाहेंगे, बट दिस विल गुड फॉर द टूर्नामेंट, आई बिलीव दैट, बिकॉज अगर आपके पास रन बनते हैं ग्राउंड पे या फिर टीवी पे लोग देखने आते हैं प्रीडोमिनेंटली। अब हमारे जैसे क्रिकेट फैंस भले हमको लो थ्रिलर्स पसंद होंगे, 150 का रन बना, 150 का स्कोर बना, बट ग्राउंड पे जो जनरल पब्लिक आती है, दे आर देयर टू गेट एंटरटेन्ड, और Hmm. एंटरटेनमेंट फैक्टर ही था जो आईपीएल को इतना बड़ा सक्सेस बनाया। एंड इफ दैट इज द पिक्चर दैट यू आर लुकिंग एट, तो इससे बड़ा कोई मतलब एक प्रमोशन नहीं हो सकता, बिकॉज विमेंस क्रिकेट में हमेशा 110 120 का स्कोर देखते हुए आए हैं लोग इन टी20, 110 120 130 इज द हाईएस्ट यू लुक एट, बट Yeah. 200 के आसपास का स्कोर यू आर नॉट वेरी कॉमन, इट इज नॉट वेरी कॉमन इन वुमेन्स क्रिकेट। तो अगर वो मिल रहा है ऑडियंस को, एंड तो वो सेम टिकट प्राइस पे करेगी, मे बी नॉट इन द नेक्स्ट सीजन, बट मे बी आफ्टर 2 सीजन वो सेम टिकट प्राइस पे करेगी फॉर वुमेन्स क्रिकेट एज वेल, वहां से ग्रोथ जो है चालू हो जाएगी, बट फिलहाल दिस इज द बेस्ट प्रमोशन आई गेस। सेम वायरल मैं हूँ भाई, कल मलेरिया टाइफाइड का ब्लड टेस्ट, टेक केयर जय भाई, होपफुली यू गेट वेल सून, एंड मतलब सबको हो रखा है यहाँ पे, जिनसे मैं मिल रहा हूँ सबको सर्दी खांसी लगी हुई है, तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एज फार एज आई कैन, बट मे बी sooner or later it will catch up. Yes, Ankit, if you can tweet it. Gaurav Pandit, if Ellis Perry is your number three, then all the best, and you are too much expecting from Richa Ghosh. नहीं यार, Ellis Perry number three is not a bad option at all, as far as I am concerned, because अभी फिलहाल जो वर्ल्ड कप हुआ था, in one of the odd matches or two matches, she came into open as well. So I don't think that is a bad option, because she is a genuine all-rounder जो आपकी टॉप Yeah. ऑर्डर बैटिंग भी करती है, एंड शी bowls with the new ball as well. तो जो आज उनको पोजीशन मिला, particularly आज जो मिला पोजीशन, I think that was a very good utilization of her resources. So I believe आज उनका perfect utilization हुआ है, नेक्स्ट मैच से मे बी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, बट Hmm. इस मैच में उनको प्रॉपर रोल दिया गया है, एंड आई सी दिस बीइंग अ नॉर्म राइट नाउ। And with this, Abhinav has joined in with the stream, or Abhinav, a MIK fan, of course. So we have another perspective as well, not just RCB. Hi, Ronak. Hi, Neha. Hi. Hi. What are you talking about? Yeah, we are talking about how RCB has lost three in a row, and I mean, किसने सोचा था यार? After the auction, everyone is like, RCB has built a title winning side. And to be honest, most of us also felt that way कि यार हाँ ये team अच्छी है. क्योंकि if you see, at least 7-8 names are like proper international cricketers यार उसमें. And at the, I think they represent the best sides in the world, and they are important players for those sides. It's one thing is कि यार आप वो team के part हो, and the other thing is what is your role in the team. So players like Elise Perry, Heather Knight, these are like legends of women's cricket. So yeah, surprised to see RCB doing performing this way, but the thing is they are to be blamed themselves for this, because apart from Megan Shoot and Renuka Singh, उनके पास the bowling lineup is very inexperienced. Yes, आज Shreyanka is her name, if I'm not wrong. Yeah, Shreyanka, yeah. yeah, she picked up a couple of wickets. There was another bowler who picked up a couple of wickets. But if Megan Shoot and Renuka Singh Thakur don't pick up wickets, RCB is not going to win most of the games, is what I feel. I think Renuka Thakur, she went at 9 per over, got 1 wicket. Megan Shoot as well. So I think RCB, they have a very strong batting lineup. I think that's no one is denying that. But uske baad, bowling is what wins you T20 matches, is what I feel. So I think if you don't have that base covered, then it's going to be a struggle. yeah, before we discuss further, thank you JY for this kind gesture. आपने super chat भेजा है. Lots of love to you as well, and hope you recovers soon, or we'll keep bringing this content for sure. Wishing you endless success and lots of love to you as well. Keep coming out with sports content. Yes, soon we'll come out with other sports as well, not just cricket, but that is in buckets right now. Let's see how it goes. बट थैंक यू सो मच जय भाई, और यहाँ पे कुछ कमेंट्स हम मिस आउट करेंगे, सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि अभी बहुत सारे कमेंट्स लाइन अप हो गए, तो अभी जो नए कमेंट्स आए हैं उनको लेते हैं थोड़ा, और फिर वापस से अपने डिस्कशन पे आते हैं। एंड वन स्पेसिफिक पॉइंट व्हिच अभिनव मेंशन अबाउट इज रेणुका सिंह ठाकुर। शी वाज इन अ ग्रेट फॉर्म टिल CWG, कॉमनवेल्थ गेम्स तक बहुत अच्छे फॉर्म में थी,
उसके बाद शी हैज अ डिप, और अभी फिलहाल वर्ल्ड कप में आई रिमेम्बर जस्ट वन मैच शी डिड परफॉर्म वेल, वाज टेकिंग अ 5 for। उसके अलावा आई डोंट रिमेम्बरिंग हर गुड परफॉर्मेंसेस इन द पास्ट फ्यू मैचेस, अराउंड 10-15 मैचेस। और इसमें भी उनका कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं है पिछले 3 मैच में, एंड दैट इज पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ वन रीजन विच आई कैन थिंक ऑफ, इज स्विंग नहीं मिल रहा है। और डी वाई पाटिल इज अ पर्टिकुलरली नॉट अ प्लेस वेर यू गेट लॉट ऑफ स्विंग, दैट इज हैम्परिंग हर बॉलिंग टू एन एक्सटेंट। और अगर उनको थोड़ा बहुत मदद मिलेगा तो शी इज योर बेस्ट एक्सपोनेंट, बट फिलहाल के लिए कोई स्विंग है नहीं, तो यू विल हैव टू रिसॉर्ट टू योर सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, व्हिच आई फील एट द मोमेंट रेणुका सिंह ठाकुर के आर्सेनल में मिसिंग लग रहा है। एंड इफ दैट इज द केस, तो this result, because you cannot threaten anyone in women's cricket as well with 110 kilometer of speed, 110 105 ऐसा कुछ speed उनका 110 के आसपास। So I don't think you will be able to threaten anyone with your other things. You will have to bring in some other arsenal, maybe a slower bouncer or something like that. You will have to add, like Alice Perry has, अगर उनका खराब दिन भी जा रहा है तो she has bouncers, she has cutters, you will have to experiment with those as well. गौरव पंडित बोल रहे हैं, मैं पहले क्लियर कर दूं, मेरे को आरसीबी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं पॉइंट्स देख रहा हूं, बस मुझे जो लगा मे बी ये पहले का कोई कमेंट से रिलेशन है, बट अभी फिलहाल cricket forever. Hey guys, those who all are watching this beautiful stream, please do like, subscribe and share the stream. Of course, please do like, share, subscribe, or also in the comments, sorry, in the description we have Neha ka a wonderful podcast ka link. I have seen a couple of episodes as well. She does wonderful job with her podcast. She has interviewed a lot of people. I don't even remember what is the count right now, 100 something, 150 around. Yeah, I'm at 188 right now. Yeah. 188. So 188 podcasts. That is tremendous job on her side. So please do support her as well. उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक उनका दिया हुआ है, तो यू गो एंड चेक आउट ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स वो हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो एप्पल हो, एंकर हो, और एक कौन सा है, Spotify. Spotify. Sorry. Yeah, that should come first, but yeah, Spotify as well. So please go and follow her on all the platforms, और Instagram पे काफी वो एक्टिव रहती हैं, तो check out that as well. अभिनव आ गए हैं, हम साथ साथ हैं, बिल्कुल अभिनव। नहीं, अभिनव अभी गाएंगे हम साथ साथ। अच्छा, ओके। दैट्स फ्रॉम जे। जे इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। या चलो, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। ध्रुव त्यागी शायद आरसीबी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है कि He's not an RCB fan. देख के तो नहीं लग रहा, अगर ये कमेंट किया तो आई थिंक आई डोंट थिंक ही इज एन RCB fan. he is not an RCB fan, but RCB के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है कि अब कैलकुलेटर की रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी, वो शायद उनको। I mean, they can still finish in the top 3, but their bowling has to step up यार अभी, क्योंकि if evening games and these tracks, they will get slower as we go ahead in the tournament. Pitches slow होने वाली हैं, and they'll start turning a bit more. If the spinners can do really well, step up a bit, and if new ball say Renuka and Megan can get them a couple of quick wickets for every team, because if you see her team mein na, if you get the top 2 batters out, then it is a bit of a struggle to get that innings on track. For example, अगर आपने Meg Lanning को जल्दी out कर दिया, do you think Delhi can score that score? मतलब जो भी अभी वो कर रहे हैं बैटिंग, if you get Haley Matthews out early, then do you think Mumbai can consistently perform that way? So I think this is all which teams need to talk about. कि यार let's talk about these plans कि हम ऐसे इनको out करने जाते हैं, and then let's build on from that. Because अभी they are, I think what they are thinking is कि यार हमें ये score तक इन्हें restrict करना है. If you go from that point of view, I don't think that's gonna work. Absolutely, and like Jay, again a tune in for Neha as well. Nice to have you on the show. Surely gonna visit on your podcast. तो आपके काफी सारे fans बन रहे हैं हमारे यहाँ पे. Hopefully, will be able to add few numbers to that. Jay बोल रहे हैं, रौनक भाई, lot of similarities between RCB men and women. Good team, good leader, good coaching, but again team effort failed. Yes, that is indeed true. वही हम डिस्कस कर रहे हैं काफी टाइम से, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया स्ट्रीम करते हुए, और वही एक मेन पॉइंट निकल के आता है. वी हैव अ गुड आर्सेनल, बट द एरो इज नॉट फायरिंग ऑन द स्पॉट. तो जो अब नहीं हो रहा है उस पर डिस्कस करने से अच्छा है कि क्या गलतियां की थी और क्या उस पर रेसिप्रोकेट कर सकते हैं हम. लेट्स फिगर दैट आउट. और उससे पहले
बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट आरसीबी अ लॉट, तो गुजरात का भी कुछ पॉइंटर्स हम अभी अभी फिलहाल लेके आते हैं जो मेरे पास हैं फिलहाल। द फैक्ट दैट दे स्टार्टेड विद द फुल थ्रॉटल, मतलब एकदम से पूरा गियर रखा, ऐसा कुछ नहीं कि सेकंड बैकअप उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि सेकंड बैकअप क्या होगा। डंकली जस्ट वेंट बर्जर्क, 18 बॉल में 50 किए, फास्टेस्ट What ऑफ an हिज innings. आईपीएल WPL, yes, what an innings, of course. उनके बाद हरलिन देओल प्लेड द परफेक्ट एंकर रोल। उसके बाद फिर उनके पास भी एक प्रॉब्लम है कि उनके पास ये बैटिंग डेप्थ उतना कुछ खास नहीं है। स्नेराना ऑफ कोर्स कम्स एट नंबर 7 और नंबर 8। उनके पास कोई बैटिंग डेप्थ उतनी है नहीं। इफ यू सी गार्डनर, शी हैड टू कम एट नंबर 4, ऑफ कोर्स अ गुड पोजीशन फॉर हर, बट Gardner as a finisher did a nice job. Gardner as an anchor can do a nice job, but still on untested waters. तो आई फील उनका बैटिंग लाइनअप इज हाईली, जैसा कि पिछले 2 मैच में हुआ था, इफ योर हर्लिन देओल एंड गार्डनर को निकाल देते आप इस टीम से, डंकली इज अ हिट एंड मिस। वो जिस मैच में चलेंगी उस मैच में 50 में 18 है, जिस मैच में नहीं चलेंगे उस मैच में आपको 0 या फिर 2 का स्कोर भी देंगे। तो यू हैव टू मेन बैटर्स, हर्लिन देओल एंड गार्डनर एज ऑफ नाउ, और अगर उन दोनों में से कोई एक नहीं चलती है, बिकॉज दे आर मिसिंग, क्या नाम था कैप्टन का, Beth Mooney. Beth Mooney. If Yeah. Beth Mooney is not in the squad, then you are losing half your batting. That is for sure. और उसके बाद फिर अगर हर्लिन देओल, गार्डनर, इन दोनों में से किसी का ऑफ डे रहता है तो they will struggle a lot. तो good to look at the way they have structured the team. आज 201 पहुंची, lot of positives. डंकली का फॉर्म में रहना, हर्लिन देओल 3 repetitive matches, मतलब back to back 67 runs, good on her, और ऐसा अगर कंटिन्यू करती है तो कैन बी अ सुपरस्टार एज वेल, ऑलरेडी अ सुपरस्टार बट कैन बी अ बिगर सुपरस्टार एज वेल। तो yes, they have a couple of things sorted out, but उनका भी बॉलिंग लाइनअप कुछ खास मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, but they are doing well something in clusters. Maybe they are looking to, how they are doing it I don't know, I don't have an answer, but they are doing it क्योंकि उनके पास भी कोई बॉलिंग लाइनअप ऐसे कुछ है नहीं कि दे कैन ब्लास्ट आउट एनीथिंग। बट एक बॉलिंग लाइनअप में उनके पास एक एक्सपीरियंस कैंपेनर में मे बी who is there, Sneerana, we are calling her experience because she has an experience of playing for India के लिए Yeah. वो ज्यादा मैच नहीं खेली है, 12-13 मैच खेली होंगे if I'm not wrong, and Yeah. Gardner is their second of best option। उसके बाद कोई वैसा किम गार्थ you can call the third option। इन तीनों के अलावा किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं बॉलिंग का, तो they have quite a lot of loopholes, but they won the match today, so Who is congratulations to that them। Australian medium fast bowler in Gujarat? Sutherland? Annabelle Yeah, Sutherland. she's one option. So, but yeah, I think Gujarat, yeah, no one is going to deny that Beth Mooney is a huge miss. Probably consistent run getter में से अगर आप WPL में देखते हो, then Meg Lanning and Beth Mooney are at the top of that list. And now replacing her with Laura Fulfart, I think, yeah, Laura Fulfart ने करा ना replace, if I'm not wrong. हाँ. Yeah, yes, so I yes. think, yeah, that's a good pick, but I don't think it will have the same impact. But Laura Woolward का जो World Cup था, she had a stellar run ना, मतलब especially in the latter stages. Just based on the team composition, I think Beth Mooney का जो impact है, to replace that is not that It's easy. It's like talking about replacing Smriti Mandhana with someone upcoming, in the Indian setup or something like that, who's doing really well right now. So I think, yeah, she's a great player. I really love her, batting style. She bats like a proper. I mean, not many, male cricketers also do that. She's a very stylish batter, yeah. But I think from the impact point of view, I don't think she can have the same one. Yeah, actually there were a lot of debates कि लॉरा वुलवर्ड को पिक कैसे नहीं किया ऑक्शन में। there were debates, but she is here now, और जैसा कि बहुत क्रिटिसिज्म हुआ जब वो डियाना डॉटिन के साथ हुआ, that she was treated that way, but hopefully this exchange would be a better one for Gujarat, और थोड़ा जो टॉप ऑर्डर में एक्सपीरियंस अभी फिलहाल दिख रहा है कि सोफिया डंकली हैज डन अ गुड जॉब। अब उनको डायरेक्टली स्लॉटिंग करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ, क्योंकि ये जैसा कि आज सोफी डिवाइन के साथ हुआ, अगर वो आज परफॉर्म नहीं करती तो फॉर श्योर नेक्स्ट मैच डैन वैन वाज इन। अदरवाइज अब तो ये परफॉर्मेंस आ गई है, इसके बाद आई डोंट सी कि डैन वैन को नेक्स्ट मैच में मौका मिल रहा है इन प्लेस ऑफ सोफी डिवाइन। और बाकी जो आपके 3 है, एलिस, पेरी, मेगन शूट और हिदर नाइट, इनको आप डायरेक्टली पिक करते हो। सोफी डिवाइन वाज द ओनली पर्सन जिनके जगह डैन वैन आ सकती थी, एंड शी माइट बी पिक्ड अगेन। तो डैन वैन को शायद मौका ना मिले अगले 1-2 मैच तक। तो
let's see how it goes. यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए थे जो मैंने मिस आउट कर दिए। एक तो यूसुफ भाई, स्मृति मंदाना इज गुड इंडियन वुमेन्स कैप्टन फॉर आरसीबी टीम इफ शी। हाँ, वही हमने बात की थी। I हे don't think गाइस, Smriti can do much with her captaincy as well. I think I won't say she's doing a really good job, but she doesn't have many options, to be honest. I mean, she's bringing in Heather Knight at the right time because she's still expecting कि यार उनके जो lead bowlers है वो wickets निकाल के देंगे। अभी हर मैच में you cannot expect Heather Knight to come and pick up like 2-3 wickets. That is literally you are not that is saying कि यार you're playing with 10 men, 10 women. ऐसा लगेगा फिर। नहीं यार, अभ्युदय भाई अभी छोड़ के मत जाओ, पहले ये देख लो, इसके बाद अगर आज आज नींद नहीं आए तो देख लेना। बट आप कभी भी देख सकते हो, वो रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है, वो अवेलेबल है आपके लिए। तो एंड फ्री ऑफ कोर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्री भी है शायद Yeah. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो यस, यू कैन वॉच देयर एज वेल। आरसीबी कैन विन दिस टूर्नामेंट, आई हैव फेथ। वाओ, Yeah, ये I mean बहुत that's what you need, यार। faith ही चाहिए, but Optimism. yeah, exactly. but अगर क्या बोलते हैं, आई एम नॉट if टेकिंग दिस कमेंट, आई एम स्किपिंग दिस। yeah, but if the other teams like Delhi and Mumbai वो ऐसे तरीके से खेलते रहेंगे, then it is like very tough to, then it is fight for the third spot in short. या अगर दिल्ली और मुंबई, स्पेसिफिकली मुंबई जिस तरह से खेल रही है, दे आर ऑन ऑन ट्रैक। अब कल जो मैच होगा दिल्ली वर्सेस मुंबई विल बी अ ब्लॉकबस्टर, मतलब Yeah. Yeah. वो देखने लायक होगा, क्योंकि दिल्ली का स्क्वाड इज वेरी गुड, जैसा हमने पहले भी बात किया, इज वेरी गुड। बट उनकी टॉप ऑर्डर जो परफॉर्मेंस उनको स्टार्ट दे रही है, दैट इज द बैकबोन। अगर उसको जल्दी आउट कर लेती मुंबई, आई वुड लव टू सी उसके बाद क्या करती है, क्योंकि उसके बाद उतना एक्सपीरियंस है नहीं उनके स्क्वाड में इन द बैटिंग डेप्थ। Who's that left arm spinner, the purple cap holder, Saika Saika Ishak? Ishak. Yeah, Saika Yeah, from Ishak. Mumbai. She's really good, man. I think Indian team के पास अगला वो left arm spinner आ गया, because she bowls at a great pace, line and length बहुत सही है, can bowl with the new ball, can bowl with the old ball, turn भी करती है ball. So I think uh, a great package, a great find. Probably the first find for Indian cricket in the From this. WPL is Saika Ishak. Or I'm really eager to see how she bowls against Meg Lanning. If Harmanpreet Kaur is daring enough, she'll give Saika Ishak the new ball and try to get her out early. Yeah, if Saika Ishaq get off the mark, then yes, she will be a good prospect for Indian team. फिलहाल तो अभी 2 ही 3 मैच हुए हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज, क्योंकि आईपीएल से हमने ऐसी गलतियां बहुत बार कर रखी हैं कि जो एक मैच एक सीजन अच्छा करते हैं उनको इंडियन टीम में खिला लो, फिर वो 2 3 मैच के बाद गायब हो जाते हैं। Yeah. लेट्स नॉट डू दैट विथ हर, उनको थोड़ा टाइम दो एंड देन गेट हर इनटू द नेशनल स्क्वाड, क्योंकि अभी फिलहाल स्पिनर्स की कोई कमी नहीं इंडियन टीम को, अभी No, इतने स्पिनर्स। my only point was because Radha Yadav has been out of form. I think For some time, Rajeshwari yeah. Gaikwad has been out of form recently. So I think Saika Ishak, only because if she gets the purple cap in this IPL, I think she'll come directly in the team. Yes, undoubtedly, we can think about that. वो आ सकती हैं squad में for sure. What about this, Neha? Your thoughts on this? Once women IPL Women's Premier League takes off, we can also see mixed gender matches for a game or two, like 6 men or 5 women, or vice versa. It will be such a good social message. Yes. I mean, it does sound like an interesting initiative. मतलब RCB ने भी ये float किया था कि let's try these mixed gender matches, but the BCCI squashed it immediately because उन्हें लगा था it wouldn't be a fair playing ground. मतलब exhibition match perspective and from a promotional perspective, yes, it would be good to have the men and women go at it against each other and have the mixed gender matches, but it still may not be the best idea, although it does promote for a good social message. But I think the level of competition in men's and women's cricket is very, very different, because women's cricket में अभी भी देख रहे हैं कि the boundaries are smaller and कुछ injuries हो गए. If something unforeseen happens, it may not be the most ideal thing. So I think that's the reason that's stopping the BCCI from trying this out. One idea could be जो 14 मैचेस का जो सीजन होता है इन मेंस, जिसको हम आईपीएल बोलते हैं, देन you extend those number of games, you add women's game in between, like, and you count that game as Mumbai Indians game, and you count that game as RCB's game, and then you decide कि उसके ऊपर, because then it makes it more interesting as a as a neutral, as sometimes
you start following your teams more. मतलब अगर Mumbai Indians women's and men's are playing, like one is playing on Saturday, one is playing on Sunday, or one is playing on Monday, and both of them are counted as Mumbai Indians games. Even if Mumbai loses, I mean, if the men's team lose and if the women's team win, that is like one win out of two or something like that. I think this could be one idea which we can see. मतलब Yeah, 100 में भी हम देखते हैं, like, you know, the men's and Yeah, women's matches happens parallelly, if not on exactly. different days, which is actually an interesting Yeah, initiative. it's really interesting. yeah, and in fact, adding that point system to it, कि 14 ही मैच खेल रहे हैं, but maybe men's are playing 8 matches or women's are playing 6 matches, and those 14 matches will be counted for that team. But the problem is 5 teams से 10 team करना in next season would be a pretty hefty task. It Yeah. might take 4-5 years in the making. Maybe तब सोच सकते हैं. फिलहाल तो let's celebrate what is happening on the field, क्योंकि it is catching rounds. मतलब numbers अच्छे कर रहा है, because I am a part of the broadcasting team. तो मुझे पता है numbers अच्छे आ रहे हैं, is almost on par with not on par with IPL, but on par with PKL and all the other leagues. So they are doing good numbers, and it will sustain for sure in the coming seasons. Let's see how it goes. Let me clear this. गुजरात अच्छा नहीं खेली यार. हाँ यार, अभी क्या कर सकते हैं, अभी हो रहा है, क्या कर. I think it's always the barest of the margins, you know, that ensures Yeah. a team ends up on the other side. And आज RCB का day नहीं था, as clearly seen with the result. Yeah, we had a bad day at the box office. थर्ड टाइम बोल रहे हैं हमें, आज आरसीबी का डे नहीं था, आज RCB. Yeah, but let's see how it goes. आज जो था हो गया. कल नहीं, की but बात करते हैं. कल it's serious यार. If they lose one more game, then I think it's curtains. Yeah. Yeah, it can be curtains. और श्रियंका पाटिल, in fact, is a good find for RCB Yeah, great and find. for Indian team as well, because तीनों मैच में she did play a good cameo role in all 3 matches. आज इतना नीचे नहीं आना, नीचे नहीं भेजा. Maybe she could have been promoted. I can understand क्यों पूनम को ऊपर क्यों भेजा, क्योंकि वो डोमेस्टिक में ओपन करती हैं, टॉप ऑर्डर में आती हैं. That mindset I can understand, but उनके बाद भी नहीं भेजना, उनके बाद भी श्रियंका को नहीं भेजना was a mistake in my opinion. Yeah. आप भेज Same. सकते थे. But let's hope कि ये mistakes, छोटे-छोटे mistakes which count in a big way, वो नहीं करे RCB. In fact, in अगले match, let's hope for the best. Yes, Yes. of course, Shanga Patil is a good find, good all rounder. RCB women has to win 3 matches and wait for result. RCB women have 5 matches. यार ठीक है, अब इतना Because optimistic. the thing is, खाली दिल्ली के सामने खेला है अब तक आरसीबी ने, मुंबई के सामने तो आई थिंक दे लॉस्ट कन्विंसिंगली दोनों टीम के सामने है. यू कैन काउंट कि एटलीस्ट एक और मैच शायद वो हार सकते हैं दोनों में से एक टीम से. तो इफ दैट इज द लॉस, देन आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट टू द playoffs. Sorry, Yeah, that game. absolutely. It will be a very big task, very big hill. Before we wrap up, last 5 मिनट में अपने कल का बात कर रहे थे. कल 3 इंटरेस्टिंग मैचेस लाइंड अप है. पहला इज ऑफ कोर्स द फाइनल एंड द फॉरमोस्ट टेस्ट मैच, जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट विल डिसाइड आवर फेट कि हम फाइनल्स में पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे. ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बट दैट विल डिसाइड आवर फेट. Second is, of course, the blockbuster at night at Delhi versus Mumbai. Third is England versus Bangladesh ka first T20I match. So all 3 big अरे encounters. ब्लॉकबस्टर रौनक न्यूजीलैंड श्रीलंका भी है, डोंट फॉरगेट. अरे yes, इंडिया ने अभी तक England, क्वालिफाई करा नहीं है. अभी New लग रहा है कि Zealand. हो गया हम क्वालिफाई, आज हो जाएगा मैच शुरू उनका भी. तो imagine if Sri Lanka somehow pulls this off and then we are like, अरे भाई ये क्या हो गया. That is a hard pill to swallow, because न्यूजीलैंड को कोई और टीम वहां पे जाके नहीं हराई और श्रीलंका जाके हराएगी, तो that will That is be what Sri Lanka does, man. These days अभी आजकल वही कर रहे हैं. hopefully it does not happen with us this time around, but अगर हुआ तो it will be a good thing for cricket as an overall. But एक नया नेशन उभर के आएगा in the cricketing mixture, क्योंकि फिलहाल तो अपन तीन चार ही कंट्री को गिनते हैं: ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड इंडिया, पाकिस्तान टू एन एक्सटेंट एज वेल. तो ये 4-5 कंट्रीज ही हैं फिलहाल. अब अगर श्रीलंका वैसे करता है तो मे बी गुड थिंग फॉर देम. कल के मैच जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में है, इफ एनी टीम्स, क्योंकि कल का मैच पता नहीं इंडिया खेल रही है कि नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट खेल रहे हैं, बिकॉज न्यूज आ रही है कि नरेंद्र मोदी विल डू कमेंट्री, नरेंद्र मोदी विल डू द कॉइन टॉस, फलाना ढिमकाना. These are the news that are coming in, flowing in the news lines. So अगर वैसा होता है तो maybe he will go and bat as well.
अगर अगर कमेंट्री में आते हैं तो मन की बात चालू हो जाएगी वहां पे. Hopefully we have a great match tomorrow with the India and Australia as well. But your thoughts on that match, and how should India approach specifically after the last loss? तो अगर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करें तो इंडिया हैड अ परफेक्ट स्टार्ट, विनिंग द फर्स्ट 2 टेस्ट्स विद इन 3 डेज. सो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस था, गोइंग इनटू द थर्ड टेस्ट. इंदौर में खेल रहे हैं. दिस इज अ वेन्यू वेयर वी हैव वन, रीजनेबली एंड बाय मैसिव मार्जिन्स एज वेल. Yeah, बट मुझे लगा कि थोड़ा कॉम्प्लिसेंसी क्रीप इन हो गया था इंडिया के माइंडसेट में. दे वर लाइक हम तो जीत जाएंगे, बट देन the result obviously didn't go in our favor, and through the series हमारा batting also has been a massive concern in itself, right? So ये होप रहेगा कि फोर्थ टेस्ट में वी विल गेट टू सी अ बेटर बैटिंग परफॉर्मेंस, बिकॉज विराट कोहली हैज बीन awfully silent through the series. So this could be the perfect opportunity for him to roll back in form and have the middle order contribute as well. And India will have to take this match seriously, because World Test Championship finals की बात है, qualification होना बहुत जरूरी है. We lost the first one to New Zealand, so this one is going to be very interesting test match and a lot to look forward to, I'd say. yeah, absolutely a lot to look forward to, because बहुत बड़ा encounter, and like you said कि इसका impact वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे पड़ने वाला है. तो yes, a lot to look forward, but the biggest question is, will Akshar play or will Kuldeep Yadav play? I think Which Aksar is will play. Aksar will play. I think जो ट्रैक रिकॉर्ड था लास्ट टाइम जब इंग्लैंड को हराया था, अक्षर Yeah. was the main reason. So I think अक्षर पटेल will play. And अभी कह सकते हैं यार होम ग्राउंड है, yes, अक्षर पटेल का. So I think yeah, I think so Aksar will play. And yeah, like Neha mentioned, I completely agree कि India has to win this game. If we lose this one, थोड़ा problem तो होगी. Even if we qualify for the World Test Championship, then that means if the series is 2-2, Australia has won the series in my opinion then. Yeah, absolutely. Specifically उन conditions में जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट ज्यादा मिलता है. एंड एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, जो नेहा ने मेंशन किया, बैटिंग हमारी काफी टाइम से नहीं क्लिक कर रही है एज अ यूनिट. This is not about this series or a series previous prior to this or Yeah. before that. हमारी टॉप ऑर्डर बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही है. बीट एक आध मैच में कोई चलता है, बाकी वरना हमारे जो लोअर्ड ऑर्डर है वही वो के बचाते हैं. ऋषभ पंत थे, अब वो कब आ रहे वो पता नहीं, बट ऋषभ पंत थे, जडेजा थे, यही आके हमें मतलब इनिंग्स को ऐसा जगह पहुंचा जहाँ पे फिर बॉलर्स अपना काम करते थे. तो वी हैव बीन स्ट्रगलिंग, क्योंकि किसी एक मैच में राहुल ने सेंचुरी मार दी, किसी एक मैच में रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दी, किसी एक मैच में किसी ने पुजारा ने रन बना लिए. वो एक एक मैच हो रहा था. कभी कलेक्टिव यूनिट की तरह हमने बहुत टाइम से नहीं खेला है, विच वाज लास्ट टाइम जब हमने ऑस्ट्रेलिया में टूर किया था 2018 में. तब मुझे याद है कि कलेक्टिव यूनिट की तरह खेले थे, जहाँ 500 रन बना रहे थे अपन फॉर 500 600 रन बना रहे थे. बट उसके बाद आई डोंट रिमेम्बर अ सीरीज जहाँ पे अपन ने इंडिया ने काफी अच्छा एक बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाया थ्रू आउट द सीरीज. मे बी वन ऑड मैच, बट थ्रू आउट द सीरीज काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया. आई कैन नॉट रिकॉल दैट. आपकी मेमोरी में है तो आई डोंट नो, बट मुझे याद नहीं आ रहा कि एक सीरीज पूरा सीरीज में कब अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाया. एंड दैट हैज बीन अ वरी. शायद इंप्रूव हो जाए, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दे आर डूइंग गुड अंडर स्मिथ्स लीडरशिप, एंड वो वापस से मैच, बिकॉज कैप्टनसी ऑफ पैट कमिंस एंड स्मिथ, यू सी अ स्टार्क डिफरेंस. जिस तरह से स्मिथ ने हर एक बैटर के लिए प्लानिंग किया, हर एक बैटर के लिए उन्होंने फील्ड पोजीशंस चेंज किए. पैट कमिंस वाज नॉट दैट वोकल अबाउट इट. वो फील्ड पे दिखा थर्ड मैच में द डिफरेंस बिटवीन स्मिथ्स कैप्टनसी एंड पैट कमिंस कैप्टनसी. अब क्या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का क्या लॉजिक है, और क्या वो किस तरह से ट्रीट करती है पॉलिटिकली अबाउट दिस इशू कि स्मिथ को वापस से फुल टाइम कैप्टन बनाना है नहीं बनाना है, दैट इज देयर मैटर. बट on skill set, on captaincy levels, Smith is way beyond, for me at least. I think it's a sign कि Steve Smith is going to get the captaincy back. अगर Yeah, because if he wins this game, for sure Australia will think about Pat Cummins को vice captain बना देते हैं. Because right now, who's the vice captain of the team? Australia. I don't know कौन है. Carey है कि कौन है पता नहीं. But Steve Smith as a captain in Test match is a really good captain, I would say. I think he's one of the best captains in Test matches, and he knows how to rotate his bowlers and how to play, according to conditions. So I believe, yeah, I think it's a sign that Steve Smith will become the captain.
या स्टीव स्मिथ माइट एज वेल बिकम कैप्टन। अब बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, काफी सारे कमेंट्स, माफ कीजिएगा भाई लोग, थोड़े कमेंट्स आज कम ले पा रहे हैं बिकॉज लॉट ऑफ मैचेस आर इन द पर्सपेक्टिव टुमारो। मतलब काफी सारे चार चार बड़े एनकाउंटर्स हैं जो कल अनफोल्ड हो रहे हैं, तो उन पे डिस्कस करना थोड़ा जरूरी है टू गेट अ बिगर पर्सपेक्टिव और बिगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट पिक्चर कि क्या कल हो सकता है और किस किस मैच से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मुंबई, जो टीम जीतेगी दैट इज फॉर श्योर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, ऐसा लग रहा है। Yeah. उसके बाद जो इंग्लैंड बांग्लादेश है, वो अब इंग्लैंड ने हिस्ट्री क्रिएट की, दे आर द ओनली साइड टू बीट बांग्लादेश इन बांग्लादेश फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मतलब 8-10 साल हो गए। तो T20Is will be a great time for Bangladesh to get back to winning ways, but वो difficult लग रहा है। न्यूजीलैंड श्रीलंका again a very big ticket picture for the World Test Championship. Sri Lanka is out of sorry New Zealand is out of the game, but Sri Lanka is still intact in the game. So Sri Lanka would fight it all out. Hopefully they win as well. Not as an Indian fan, but as a cricket fan. But last इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स इज अ बिग पिक्चर। तो सबका बात करना जरूरी था। आपका क्या प्रेडिक्शन है वो आप बताइए चारों मैच का। विच टीम आर यू सीइंग विन इन द नेक्स्ट इन द गेम्स स्टार्टिंग टुमारो? दिल्ली मुंबई में कौन जीत रहा है? ऑस्ट्रेलिया में कौन जीत रहा है? इंग्लैंड बांग्लादेश में कौन जीत रहा है? और श्रीलंका न्यूजीलैंड में कौन जीत रहा है? राइट इन द कमेंट्स। यस अभिनव प्लीज। मैं पूछ रहा था यार, ये साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज क्यों खेल रहे हैं फिर? हाँ, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज क्यों खेल रहे हैं? मजे मजे में। मैं सुबह देखा कि यार अरे एक और टेस्ट मैच है साउथ अफ्रीका का, बिकॉज आई वाज तो ओपिनियन कि अब तो हो गया ना साइकिल, अब तो खाली 3 टीम के बीच में बचा है, जो भी है फालतू में ये लोग साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज में आके अपना न्यूजीलैंड इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज हुआ था इतना खतरनाक वाला, वो नहीं काउंट हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो इसकी क्या है मतलब? वो क्या ना ना क्यों? मतलब ये इनकॉन्सिक्वेंशियल टेस्ट मैचेस अभी भी हैं, पता नहीं। व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन विद दैट फॉर्मेट, तो अभी क्यों वो टेस्ट मैचेस रख रहे हैं अपन जिसमें I think World Test Championship वाला जो format है, that is not a good format in my opinion. The level of competition is like not that good, and you're talking about Test cricket यार, ऐसा भी नहीं कि the game which goes on for like 5 days, how many teams are there who can compete for like 5 straight days in international? क्योंकि हम खेलते खाली 10 teams के साथ हैं, so I think this format needs to change क्योंकि we all know out of 3-4 teams ही winner निकलने वाला है, so I think थोड़ा बहुत changes तो इधर चाहिए। विनर तो दूर की बात है अभिनव, क्वालिफाई भी बस 3-4 टीम ही करने वाले हैं, मतलब उसमें से करने वाले। वही मतलब वी ऑल नो कि इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कभी-कभी आ जाएगी, सो एंड टेस्ट फॉर्मेट इज अ डिफरेंट ब्रीड यार, यू कैन नॉट कंपेयर टेस्ट टू एनी अदर फॉर्मेट, यू नीड प्रॉपर आई वुड से डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटालिटी, एटीट्यूड, और कंसिस्टेंटली खेलना पड़ेगा यार आपको टेस्ट मैचेस। अभी आप बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश अगर कितने मैचेस खेलती है साल में टेस्ट मैचेस, आई डोंट इवन नो, यू कैन काउंट इट ऑन योर फिंगर्स, दोस आर द नंबर ऑफ गेम्स दे प्ले in a year, so and compare it to with India or England who play like 15-20 each, so I think it's given कि यार इनमें से कोई जीतने वाला है। I'm not saying कि बांग्लादेश ज्यादा मैचेस खेलेगी तो जीत जाएगी, but at least the level will increase. Yeah, absolutely. The level will increase for sure. Cricket Circle 7 का एक सवाल है, why RCB didn't promote Megan Schutt high in the batting order? मेगन शूट को ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए पिछले 2 साल में 1-2 बार बैटिंग मिली होगी, दैट इज हर उसकी गलती नहीं है वो Exactly. तो उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनता नहीं है। वो पिछले मैच में अच्छा बैटिंग की, इसलिए उनको प्रमोट कर दें ahead of proper batters, that doesn't makes any It sense. doesn't make sense, yeah. And they bat good यार, मतलब I think 7 number तक तो they have decent batters, like first team batters मेरे हिसाब से सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, हेदर नाइट, रिचा घोष, स्मृति मानधना, I think 6 तो यही हो गए। Then there's श्रेयांका पाटिल is doing good, so yeah. और उसके बाद जो पूनम जो आज लेग स्पिनर आई स्क्वाड, सॉरी लेग ब्रेक बॉलर आई आज स्क्वाड में, शी इज अ ओपनिंग बैटर इन द डोमेस्टिक सर्किट, तो उनको और कितना नीचे भेजेंगे? मतलब ऑलरेडी उनके इंजस्टिस हो रहा है नंबर 7-8 पे भेज के। तो मेगन शूट को प्रमोट लास्ट मैच के बायसनेस पे आप आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज सूटेबल। Recency bias, yeah. रिसेंसी बायसनेस। India, I think at least it's good to know कि people are now remembering players' names and stuff. Yes. With Women's Premier League, क्योंकि मेरे को भी ऐसा था कि when I saw the first couple of games, I was like, वो वाली bowler कौन थी? Now after watching 2 Mumbai Indians games, I know कौन सी player क्या perform करती है, क्या attributes हैं उनके, तो I think that is really really good to see, and very, I think as the tournament progresses, I'm not saying कि ये साल में,
for the next seasons में थोड़ा जैसे टूर्नामेंट भी बढ़ता ही जाएगा, बड़ा होता जाएगा, then I think it's going to be really really good for women's cricket. या क्योंकि कितने भी डोमेस्टिक लीग्स वर्ल्ड ओवर में हो जाए अबाउट क्रिकेट, Yeah. जब तक इंडिया में फेमस नहीं होगा तब तक उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बिग बैश वहां पे होता है, 100 वहां पे होता है, बट अभी फिलहाल साउथ अफ्रीका T20 भी हुआ है। जब तक आईपीएल का मतलब आईपीएल सबसे पहले स्टार्ट हुआ, बट आईपीएल जो क्रिएट किया एनवायरनमेंट की, जो कोई एक प्लेयर गलती से भी आईपीएल खेल गया, ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। पॉल वेल्थेटी को लोग आज तक याद रखते हैं। तो दैट सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय वुमेन्स क्रिकेट एज वेल। जो वुमेन्स प्रीमियर लीग ही कर सकता है, वो ना बिग बैश करेगा, वुमेन्स बिग बैश करेगा, ना वो मतलब कोई और लीग करने वाली है। भले दे आर मोर कम्पिटिटिव एज ऑफ नाउ, बिकॉज बिग बैश इज ऑन अ डिफरेंट लेवल व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स क्रिकेट, और से इन मेंस क्रिकेट एज वेल। बिग बैश का लेवल बहुत ऊपर है, नॉट बहुत ऊपर बट ऑन पार विद आईपीएल, और जस्ट अबव पार विद आईपीएल। बट there will be statements coming out इसके बाद players वगैरह से जो pick नहीं हुए या खेल के अब जब वापस चले जाएंगे, they'll be like especially from, I can expect that from cricket Australia and England cricket की we have a decent level. I think कुछ ना कुछ तो वो अनबन वाले statement निकलने वाले हैं कि we might not allow players, ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा. I think literally feel it because the success has been very good Yeah. WPL का so far. And I'm not saying कि I'm saying from the point of view कि यार जो board है, you can see the president, the secretary being at the game, supporting the game. One thing is invest करके छोड़ देना है, other is like जाके matches regularly देखना, conduct करना, that is a different thing. So I think that is really really good to see, and this is what I think the other leagues don't do. Yeah, absolutely. मतलब other leagues, they are focusing on the core product itself. अभी ना कुछ टाइम पहले हमने मास्टर्स डिग्री की मार्केटिंग में, वहां पे उनका होता है कोर प्रोडक्ट के अलावा जो अलग क्या बोलते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स अपन फोकस करते हैं, इसलिए इतना बड़ा लीग बना आईपीएल। फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट पार्ट ऑफ इट और से पार्टिंग पार्ट ऑफ इट, तो मसाला क्रिएट करता है। दैट इज द फैक्टर व्हिच separates इंडियन प्रीमियर लीग और WPL फ्रॉम अदर लीग्स, और वो ही फैक्टर रहने वाला है इस लीग में भी। एंड आई होप कि वो सक्सेस हमको मिले गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 2-3 years, WPL being the brand ambassador of women's franchisee league across the world। और इसके लिए भी एक कैलेंडर बन जाए, मतलब 1 महीने का कैलेंडर फिक्स की, मतलब इस टाइम पे WPL ही होगा और कोई क्रिकेट मैच नहीं होगा। लेट्स होप Also the thing is वो जो brand value है ना, वो भी काफी count करती है. I mean Mumbai Indians की brand value, if you would have played this WPL in America as well, वो ज़्यादा successful होता compared to the 100 is what I'm saying. So Yeah, I think absolutely. brand value makes a lot of value. Makes a lot of sense. For example, South Africa T20 league को ले ले, just because they had this backing from Indian franchises, उसका impact might have been bigger than IL T20, the 100, जितने भी फॉर्मेट्स हुए उनसे बेटर उनका रेस्पॉन्स आया, उनसे बेटर नंबर्स आए उनके पास, जस्ट बिकॉज द बैकिंग इज फ्रॉम इंडियन फ्रेंचाइजेस, और वहां पे प्लेयर्स वही खेल रहे हैं जो ये फ्रेंचाइज को बैक करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडियन प्लेयर्स को छोड़ के बाकी सारी टीम के प्लेयर्स उस लेवल पे खेल रहे हैं वहां पे। तो आई बिलीव यस, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट व्हिच अभिनव पॉइंटेड आउट। यस, अगर कहीं भी खेलते हम विद दिस प्लेयर्स। Do you want to take this, Neha? Laura Woolward will replace Beth Moon in Gujarat Giants. Yes, this is confirmed, but Confirmed, how big a change will that be? अभिनव ने थोड़ा बहुत इसको किया था, but your perspective on this? I think Laura Woolward का inclusion will be very important for Gujarat Giants, because जब हम Gujarat Giants का squad composition देखें तो they don't have as many like reputed Indian players like who are in the national team right now in their team. So when you have inclusion of players who are in form and overseas players, it really adds a lot of value as well. And Laura Woolward भी young है and she's already played in the women's T20 challenge as well. उन्हें Indian conditions भी बहुत अच्छे से समझ भी है उन्हें. So it will be nice to see her play for Gujarat, and उन्हें भी like wins चाहिए. Like this win has certainly given them a lot of momentum, and having someone like her in the team will be massive. But my only concern is where are they going to bat her, because South Africa usually plays around a lot with her. कभी कभी open करा देते, कभी middle order में डाल देते हैं. So for her, I think having that role clarity and consistency will be massive. Yeah, absolutely. The consistency will be the key, because अभी फिलहाल
जो जगह उनके लिए खुली थी, बिकॉज बेथ मुनी वाज नॉट देयर, वाज द प्लेस ऑफ सोफी डिवाइन, जहाँ पे, सॉरी नॉट सोफी डिवाइन, सोफिया Dekhe. डंकली, डंकली, जो उनकी जगह खुली थी वहां पे वो आ सकती थी लॉरा वुलवर्ड, बट अभी फिलहाल डायरेक्टली स्लॉटिंग करेंगे नहीं करेंगे विल बी अ क्वेश्चन, बिकॉज उनके अलावा जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी टीम में, एश्ली गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, किम गार्थ, दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेल। एनाबेल सदरलैंड इज द ओनली ऑप्शन जिनके जगह शायद ट्राई कर लें, बट दैट विल हैम्पर देयर बॉलिंग अगेन, बिकॉज एनाबेल सदरलैंड प्रोवाइड्स दैट ऑप्शन ऑफ बॉलिंग। Yeah. तो आई डोंट सी हर स्लॉटिंग इनडायरेक्टली इन द स्क्वाड, क्योंकि आज जो परफॉर्मेंस है सोफिया डंकली का, that gives a massive boost to their squad. और इसके अलावा एशली गार्डन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज शी उसके अलावा किम गार्थ हैज बीन doing really good for them. So I don't see Laura Woolward playing directly in the squad. अगर बेथ मुनी थी तो अलग बात था, but I don't see her coming right in the squad. Who has been like the Indian player and the overseas player of the tournament for you In WPL? so far? Neha, you might go first if you want. Sure, yeah. So I think from an overseas perspective, it has to be Meg Lanning. The way she's been attacking, her strike rate has been phenomenal, and वो बहुत freedom के साथ batting कर रही है, which is a very pleasant sight. So I think overseas players, it definitely has to be her. And Indian player, I would have gone with Harmanpreet Kaur because we saw her exploits in the first game and she was nothing short of brilliant. But I think Saika Ishak, man, she's really managed to just grab everyone's attention, and matlab domestic mein itna she's been such a good player, and seeing her translate those performances at the big stage is a really good side. I think a few more good domestic seasons, she can definitely slot herself in the Indian team as well. So she's a very exciting prospect, that has managed to capture my attention. Yeah, I think I kind of agree to you as well. I think the only overseas maybe I think I could be like my bias towards Mumbai Indians, but Hayley Matthews only because she bowls and gets wickets as well. I think was वो reason के लिए I was like यार Hayley Matthews भी, but I'm not saying Meg Lanning has not been good. I think she has been the best batter, and Hayley Matthews I would say I think as an all-rounder point of view I think Hayley Matthews only because the price tag है Hayley Matthews का that counts as well because she was picked up for like 50 lakhs. Yeah. So I think bargain मेरे हिसाब से तो Hayley Matthews ही रहने वाली है. Yeah, if you say value for money, Hayley Matthews को कोई replace नहीं कर सकता फिलहाल, but impact value on team would be Meg Lanning because Meg Lanning का batting जो है that has catapulted Delhi to another level. अगर Hayley Matthews अगर नहीं करती हैं तो मुंबई has another players in the lineup. उनके पास तीन बीच में ऑलराउंडर्स ऐसे हैं who can go and destruct any opponent. मतलब तो 3 ऑलराउंडर्स लॉट किए उन्होंने, नेट स्किबर, Amelia Kerr, and the third one I am forgetting the name again नाम से, but दो तीन है वहां पे बीच में जो कुछ भी कर सकते हैं, डेवास्टेटिंग मतलब वो रोल निभा सकती है वहां पे, तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, बट अगर मैग लैनिंग फायर नहीं करेंगे तो दिल्ली के ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा आएगा. तो ओवरसीज में आई एग्री विथ नेहा ऑफ मैग लैनिंग, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इफ आई गो ऑन फाइंडिंग समवन, तो फिलहाल हर्लिन देल हैज डन इट थ्राइस, 3 बार लगातार किया 3 मैच में to support a team that is struggling high time because उनके पास उनकी कैप्टन नहीं है और फिलहाल कोई और प्लेयर उतना पुशिंग रोल प्ले नहीं कर रहा है. She has been the anchor of the whole side, गुजरात जायंट्स का साइड. I believe from my perspective she has done all she could और अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से ग्रैब किया है. For me because इंडियन टीम के लिए ये एक नया रोल प्ले कर सकती हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इनको इंडियन टीम में जैसे मैंने पहले भी कहा कि नंबर 6-7 पे हमेशा खिलाते हैं और वहां पे इन एंड आउट रहती है टीम की. इफ शी गोज ऑन टू प्ले इन द टॉप ऑर्डर, इफ शी गोज ऑन टू, तो एक अच्छा, क्योंकि अभी इंडियन टीम में टॉप ऑर्डर में स्मृति मंदाना है, शेफाली वर्मा वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट, अभी फिलहाल 2 मैच में स्ट्रगल करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, बट बिफोर दैट शी वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट. जमाइमा रॉड्रिगेज अगेन वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट, एक मैच अच्छा खेला अगेंस्ट पाकिस्तान और एक लास्ट मैच अच्छा खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 2 मैच अच्छा खेला, उसके पहले शी वाज स्ट्रगलिंग फॉर 20 मैचेस कंसेक्यूटिवली. उनका फॉर्म फिलहाल रिसेंटली में अच्छा आया है एंड लेट्स सी हाउ इट गोस बिकॉज़ वहां पे जगह ओपन है. सब्बिनेनी मेघना कम्स इन समटाइम्स और शेफाली वर्मा कम्स इन समटाइम्स, तो वहां पे जगह ओपन है. तो इफ हर्लिन देल गोज ऑन टू ग्रैब दैट स्पॉट,
तो वेल एंड गुड फॉर हर, ये एक उनके लिए अच्छा Yeah. ट्यून इन हो सकता है, तो दैट दोज आर माय पिक। आई थिंक मैग लैनिंग का अगर थोड़ा सा भी असर पड़ गया ना अगर जमीमा और शेफाली के ऊपर, आई विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज या देन दैट सॉर्ट्स इंडियाज टॉप ऑर्डर बैटिंग इजीली। थोड़ा बहुत दो चार टिप्स भी ऐसी उनके दिमाग में चली जाए कि यार अब तो ये हिट कर गई है, एंड देन बिकॉज वी हैव सीन इंडियन प्लेयर्स थ्रो देयर विकेट्स अवे क्वाइट ऑफन एट द टॉप, स्पेशली शेफाली के साथ मैं कहूंगा। एंड यहाँ पे आई थिंक यू कैन सी विद दैट पार्टनरशिप विद मैग लैनिंग, जो पहले दो मैचेस में जिसमें आई थिंक एक में 160 एक में 60 कुछ तो बने थे, सो लग रहा था कि यार दैट्स अ नाइस पार्टनरशिप गोइंग ऑन। आई थिंक थोड़ा बहुत बात तो करते होंगे यार बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज ओपनिंग द बैटिंग, so you kind of spend time together a lot, so I think थोड़ा बहुत भी असर पड़ गया तो I'll be more than happy. And या Meg Lanning has a lot of conversations with Shefadi, which is really amazing. They're in the middle, they have a lot of chats, which is actually a step in the right direction. या एब्सोल्युटली, ये जो एनवायरनमेंट मिलता है, द वे इंडियन प्लेयर्स वर ग्रूम्ड ड्यूरिंग द आईपीएल, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ शोल्डर रब करते हैं, राइट नाउ वी सी ऋषभ पंत प्लेइंग अ रिवर्स स्वीप टू जेम्स एंडरसन. Earlier 10 years ago we would have blasted Rishabh Pant out, but abhi we support it because we have seen that sort of shots being played by AB de Villiers and all. They rub Yeah. shoulders in the IPL, so that sort of confidence would be given by Australian players specifically to the Indian youngsters, because ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड, लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर मेगन शूट को यहाँ पे अगर बोल रहा है कि बैटिंग करने ऊपर भेजना चाहिए था, तो वी कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दैट स्क्वाड. तो Yeah. या तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स रबिंग शोल्डर्स विद दोज इंडियन टैलेंट्स. 16-17 साल की लड़कियां हैं सारी, मतलब साइका इशाक 18-19 ईयर ऑड, तो दैट वुड बी अ बिग फैक्टर, जस्ट बीइंग इन द ड्रेसिंग रूम विद दोज लेजेंड्स. मतलब वो अपने अपने कंट्रीज में लेजेंड्स हैं, तो दैट वुड बी अ ग्रेट ग्रेट एक्सपोजर. क्रिकेट फॉरएवर भाई, हम भी बस जाएंगे अभी गुड नाइट बोल के, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे. तो नेहा दिखे, आप जो है पॉडकास्ट देख लीजिए, और हम भी देख लेंगे थोड़े बहुत. हाँ, बहुत सारे अच्छे पॉडकास्ट हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ देम, लाइक एटलीस्ट 7-8, नॉट 180 ऑड, बट 7-8 आई वॉच्ड. या yes, yes, अक्षत ने कहा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टुमारो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स ऑन द लाइन फॉर टीम इंडिया, backing our boys in blue. Absolutely, we are backing our boys in blue. Let's hope for a good contest. Maybe 2.5 दिन से ज्यादा चल जाए, मतलब जो ये लगातार 2-2 दिन के मैच हो रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा हो जाए, एटलीस्ट 4 days, 3.5 days, 4 days, तो मैच अच्छा लगेगा. मतलब फिलहाल इतने लंबे लंबे ब्रेक्स हो रहे हैं 2 मैच के बीच में, मतलब पहले मैच सेकंड से थर्ड के बीच में, दैट वाज ऑफ कोर्स, मतलब पहले से प्लान था कि एक छुट्टी मिलेगी बीच में 1 हफ्ते की, बट दैट एक्सटेंडेड टू 10-12 days, और नेक्स्ट मैच के बीच में मतलब थर्ड टू फोर्थ इज अगेन 9 days. तो उतना, अब हालांकि उसके बाद टेस्ट मैच नहीं, पर वनडेज के लिए उतना वेट ना करना पड़े. दीप्ता दीप चंद्रा आए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द स्ट्रीम दीप्ता दीप चंद्रा. हम बस अभी कुछ ही और मिनट के लिए यहाँ पे स्ट्रीम पे हैं, तो होपफुली आपको स्ट्रीम पसंद आएगा, और नहीं मतलब अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप प्लीज रिवाइंड कर लीजिए और स्ट्रीम को देख लीजिएगा. पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. आरसीबी वुमेन आउट ऑफ WPL 2023 फाइनल, MI वर्सेस DC वुमेन. लुक्स लाइक इट MI वर्सेस DC फाइनल हो सकता है फिलहाल 2-3 मैच देखने के बाद. आरसीबी बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज रेट 4.5 आउट ऑफ 10 उनका है, और हमसे पूछ रहे हैं आरसीबी की बैटिंग को, आरसीबी एवरेज बॉलिंग, एवरेज पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो, बट उनका ओवरऑल I रेटिंग think he's saying batting has been average, bowling has been average, and that is the average rating is like 4.5 out of 10. या आई कैन अग्री विद दैट, बिकॉज जो परफॉर्मेंस रहा Bowling है. तो बहुत average यार. I think I completely agree. I think सबसे खराब bowling this season has been RCB मेरे हिसाब से तो. And batting they have done well, but the thing is every team is scoring यार 160, 170. So does that make them a different side? Probably not. So I think maybe that's the reason batting is called average here as well. And maybe the criticism is harsher on the bowling because, conceding scores of 200 on like more than two occasions, does raise eyebrows on what is happening with the bowling. And earlier also we were talking about ki Heather Knight wickets pick Curry, and, your regulars are not picking up wickets, which is quite alarming in itself. So I think it is an average assessment. It is a proper assessment ki, RCB ka bowling has been Yeah. average and not up to the mark. एब्सोल्युटली. यहाँ पे
क्रिकेट फॉरएवर ने वापस से कमेंट किया कि मेरा प्रेडिक्शन कैसा लगा, तो आपका प्रेडिक्शन देख लेते हैं क्या था। India win, of course, we all want that. Delhi win, Abhinav would not want that. I don't mind anything winning because I want a good match. Yeah. England win. England, of course, might win as well because that is on cards. Bangladesh ODIs में compete कर सकती है in Bangladesh, but T20Is में T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस है यार वो, आई थिंक लेट्स गिव देम। देख अभी ये वाले जो प्रेडिक्शन है, इट्स नॉट दैट हार्ड टू मेक। ठीक है, इसमें खाली एक ही प्रेडिक्शन आई वुड से, दैट इज द WPL वाला गेम, जो लोग थोड़े कहेंगे या तो बॉम्बे या तो दिल्ली। आई एम स्टिल गिविंग दैट एज टू बॉम्बे बिकॉज क्राउड बॉम्बे का रहने वाला है एंड दे बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। आई थिंक एक भी गलत चीज नहीं करी अब तक पूरे टूर्नामेंट में मुंबई ने, सो आई थिंक आई वुड गिव मुंबई दैट एज। Battle of heavyweights, nevertheless. Yeah, let's hope for a great encounter. या मतलब वो तो होने वाला है। जो भी आउटकम हो, दैट इज ऑन पार, मतलब जो भी होगा अच्छा ही होगा, बट एक अच्छा एनकाउंटर देखने को मिले। 200 प्लस वापस से होने वाला है फॉर श्योर। if the bowling of either teams are going for a brunt, मतलब जो अभी तक नहीं गए टूर्नामेंट में। You know, the thing is, जो गेम है ना न्यूजीलैंड श्रीलंका वाला, वो शुरू होगा आई थिंक कितने बजे, 3:30 बजे के आसपास। एंड देन वो गेम का जो फर्स्ट डे का एंड होगा, दैट जैसे ही वो एंड होगा, देन द ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया वाला जो मैच है उसका फर्स्ट डे शुरू होगा। सो आई थिंक वो पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक वो अच्छी सीरीज चलती रहेगी, बिकॉज एक आग रहेगी कि यार श्रीलंका ने कुछ करा है क्या वहां पे, देन यू काइंड ऑफ यार यहाँ पे इंडिया ने क्या करा है। सो आई थिंक दैट मेक्स इट अ बिट इंटरेस्टिंग कि सेम टाइम पे मैचेस हो रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे वापस से पूछ रहा है रौनक सर, मेरी प्रेडिक्शन कैसी लगी आपको? भाई देखिए, प्रेडिक्शन आपकी काफी प्रेडिक्टेबल थी। जो जो वहां पे आपने लिखा है, 4 में से 3 तो प्रेडिक्टेबल थी, बस एक वो दिल्ली वाला जो है ऑन द फेंस था। कैसी लगी? मैं अगर रेटिंग दूं तो जैसे उसके ऊपर 4.5 आउट ऑफ 10 है, आपको भी 4.5 आउट ऑफ 10। ये लास्ट एक कमेंट है, उसके बाद हम रैप अप करते हैं। बट यू कांट चैलेंज दिल्ली कैपिटल्स माइंड, यू नो वेरी वेल। दिल्ली कैप्टन्स माइंड, Meg Lanning. Okay. हाँ, Listen, दिल्ली कैपिटल्स माइंड, दिस देख इज मेरे एन को तो यही लग रहा है इंटरेस्टिंग। कि द गेम इज प्रीटी मच ओपनिंग पार्टनरशिप ऑफ दिल्ली वर्सेस मुंबई। इफ Pretty much. वो अगर निकल जाती है, देन आई डोंट सी देम स्कोरिंग लाइक अ हाई टोटल, बिकॉज यस Marizan Cap has been scoring runs, but still getting Meg Lanning and Shefali out early could be possible कि जेमिमा का जो हम इनिंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाए, she scores like a quick 40-50 or something, or 30 balls or something, वो हो गया तो that is really good. But otherwise I see if Mumbai के पास game plan है to get these girls out. Yeah, absolutely. If we see on the performance जो अभी तक हुआ है, मुंबई is clearly heads and shoulder above every team। मतलब फिलहाल के on the basis of their all rounders specifically, जो 4 all rounders उनके पास हैं, जो foreign all rounders हैं, they are doing hell and not 4, 3, we cannot count the Tara Norris if I'm not wrong as an all rounder। तो those are the otherwise three are of supreme class। क्रिकेट फॉरएवर, यस ऑफ कोर्स। गुड नाइट नेहा, शेट्टी। यूसुफ भाई, हमको तो कभी स्वीट ड्रीम्स नहीं बोला। एनीवेज बाय। ठीक है, अभी अभी यहाँ पे एंड करते हैं। एनीवेज थैंक यू सो मच नेहा फॉर ट्यूनिंग इन। और वापस से जो लोग ये स्ट्रीम अभी फिलहाल देख रहे हैं, फटाफट जाइए, नेहा का जो पॉडकास्ट है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, पहला लिंक इनका ही दिया हुआ है, तो यू कैन चेक दैट आउट। और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अबाउट दिस स्ट्रीम, अगर आपको अभी तक पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और जो लोग बाद में देखने वाले हैं, अगर यहाँ तक आप पहुंच रहे हैं, मतलब आपको मतलब आपने स्ट्रीम पसंद ही किया होगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम बस 3000 सब्सक्राइबर से कुछ ही दूर हैं, तो प्लीज Also, we are very close to 5,000 followers on Instagram as well, so please follow us there. या उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो डू चेक दैट आउट एज वेल। तब तक के लिए मी रौनक कुमार केडिया, अभिनव मिश्रा एंड नेहा शेट्टी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द थर्ड मैन क्रिकेट शो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।